How are you dear students? Welcome to the class of chemistry. Let's start our today's topic. आज का कंसेप्ट बच्चों स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही ध्यान से देखना। कंसेप्ट बहुत इजी, इक्विलिब्रियम बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि बहुत इजी चल रहा है। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। टॉपिक का नाम है बच्चों, मेरे साथ नोटबुक में लिखो, नोटबुक ले लीजिए अपना, नोटबुक में लिखो रिलेशन बिटवीन केसी एंड जी, मतलब कि गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन निकालना है। चलो निकालेंगे, बहुत इजी होता है ना। जी क्या होता है? जी जैसे आप जानते हो, जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी। थोड़ा रिकॉल करेंगे, लास्ट थर्मोडायनामिक्स में जो पढ़े थे ना, उसे थोड़ा रिकॉल करते हैं। क्या पढ़े थे? अगर डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, सो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर बच्चों डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बना तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड अगर बच्चों डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 बना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अगर मेरे प्यारे दोस्तों डेल्टा जी का वैल्यू इज इक्वल टू 0 बना रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। कितना इजी टॉपिक है, देखो ये पढ़े हो ना थर्मोडायनामिक्स में। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अब एक रिलेशन जैसे मैं आपको देने जा रहा हूं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आप ध्यान रखना। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट क्यों लिखते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड सिचुएशन बताने के लिए लिखते हैं डेल्टा जी नोट प्लस आरटी एल एन क्यू। क्यू क्या होता है? सब लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सब लिखेंगे। डेल्टा जी नोट होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स कहां गया? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। बहुत फ्री लोग थे ये। गिब्स जो था ना, बहुत फ्री था। उसने फाइंड किया अपना एक एनर्जी इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखा जाता है मालूम है ना? स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड प्रेशर पे जो डेल्टा जी का वैल्यू मिलेगा वो होगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल स्टूडियो नहीं है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कितना वैल्यू होता है इसका बच्चे? 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कई बार होता क्या है मालूम है? बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें सबको याद रहती है, पर छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे बातें आप एग्जाम टाइम में भूल जाते हो, याद नहीं आती, एंड वहीं से शुरू होती है दिक्कत स्कॉलर लोगों के लिए। ओके, तो सारी छोटी छोटी चीजों को बहुत ही बारीकी से फोकस करते हैं। जितना बारीकी से इसे फोकस किया उतना ही आपका कंसेप्ट बढ़िया जाएगा। ओके, अब देखो आर का वैल्यू लिखा, अब आएगा टी टेम्परेचर। जनरली हम बच्चों कंसीडर किस में करेंगे? टेम्परेचर। अब देखो जी का आर का जो यूनिट लिखा वहां पे आप लिख लो केल्विन इनवर्स, तो आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए ना, वो होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स केल्विन में। इसमें केल्विन में। ऑलराइट, अब क्यू क्या चीज है? क्यू होता है रिएक्शन कोशिएंट। कैसे फाइंड करते हैं रिएक्शन कोशिएंट? तो मैंने आपको समझाया था, याद नहीं याद है? नहीं याद है, सब भूल गए बच्चे। बहुत ही बढ़िया, सर फिर से याद करवाएंगे। भूले नहीं है हम लोग, कभी कुछ नहीं भूलते। ये बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। C⁻C, D⁻D, यहाँ पे आएगा बच्चों A⁻A। मैंने एक बात बोली थी, आपको याद है? मैंने क्या बोला था कल? कि जब आप Kc लिख रहे हो ना, तब कॉन्सेंट्रेशन कौन सा आएगा? इक्विलिब्रियम टाइम वाला। और जब Qc लिख रहे हो तब कॉन्सेंट्रेशन कौन सा आएगा? कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। ओके, तो ये इक्वेशन आपको एक दी गई है। नाउ एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम हम क्या लिखेंगे? एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम बच्चों एस्टैब्लिश हो चुकी, तब आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे डेल्टा जी बना जीरो। एंड जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गई तब क्यू बना हमारा
केसी। क्यों क्या बना हमारा केसी, या फिर ओनली के, बुक में ओनली के दिया है, मैं केसी लिख रहा हूं, दोनों चीजें सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे 0, यहां पे आएगा डेल्टा जी स्टैंडर्ड, उस वो थोड़ी 0 होगा, वो तो ऐसे का वैसा रहेगा ना, आर टी एल एन के सी। ओके चलो बहुत अच्छे। अब देखो क्या कर रहे हो तुम, यहां पे मैं काम करूंगा बच्चों, माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा आर टी एल एन के सी। केसी क्या चीज है, केसी है बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके ओके डन। अब देखो क्या करेंगे, आरटी को नीचे ले लो, सो माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड, ध्यान से देखना कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इज इक्वल टू बनेगा एल एन के सी, बनेगा ना। ओके अब देखो, अगर आपको एल एन निकालना हो तो यहां से दो चीजें बन सकती है, मैं आपको एनसीईआरटी वाला चीज दिखाऊंगा, उसके बाद अपना कैलकुलेशन वाला चीज भी बता दूंगा, तब जब भी आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो वो आपको दिक्कत दे देगा, बहुत आसान तरीके से आप सारा काम कर पाओगे। ओके मैं क्या कर रहा हूं, एल एन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ई को पावर में, ये सारी चीज को मैं एक्सपोनेंशियल के पावर में रखूंगा, सो माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड डिवाइड बाय आर टी इज इक्वल टू के सी। ये डायरेक्ट मेथड होता है। अगर एंटीलॉग नहीं लेना, डायरेक्टली एल एन निकालना है तो ई के पावर में रख दो, बात खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इससे एक और नया इक्वेशन बना पाओगे कि माइनस डेल्टा जी नोट, ये भी समझने वाली चीज है, डिवाइड बाय आर टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 केसी। लिखोगे ऐसा कुछ, चलो ठीक। अब देखो क्या बनाओगे, माइनस डेल्टा जी नोट डिवाइड बाय आर टी 2.303 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 केसी। तो इस तरह से ये भी इक्वेशन ठीक है, ये भी बनेगा। अगर चाहो तो एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लिया तो ये सारी चीज का एंटी लॉग जाएगा, ये सारी चीज का। क्या देखने वाली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वो पढ़ाई करना है। चलो, इफ डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज लेस देन 0, अगर वो लेस देन 0 हुआ, मतलब डेल्टा जी स्टैंडर्ड कैसा है, नेगेटिव में है। अगर ये नेगेटिव में होगा तो ये सारा टर्म डेल्टा जी स्टैंडर्ड डिवाइड बाय आर टी वाला जो टर्म है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। अगर ये वाला टर्म नेगेटिव है बच्चों, ये वाला टर्म अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पूरा टर्म पॉजिटिव होगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है 2.303। ओके उसका पॉजिटिव पावर, ओवरऑल आंसर कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। तो केसी आपका आएगा बच्चों हाई, केसी हाई। अगर केसी हाई आ रहा है तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी, प्रोडक्ट विल बी हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है, तो ध्यान रखना, मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल करके। अगर डेल्टा जी स्टैंडर्ड का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बना तो ओवरऑल जो बनेगा बच्चों माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड डिवाइड बाय आर टी, वो बनेगा लेस देन 0। अगर ये पॉजिटिव है, आगे तो नेगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर ओवरऑल आंसर नेगेटिव बना, ये आंसर नेगेटिव, ई रेस टू समथिंग नेगेटिव, तो ई का जो पावर नेगेटिव में जा रहा है, ओवरऑल केसी का वैल्यू कम होता जाएगा, केसी डिक्रीज। अगर केसी डिक्रीज हुआ तो प्रोडक्ट कम मिलेगी, रिएक्टेंट ज्यादा बचेगी, रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड। जनरली जो रिएक्टेंट होंगे बच्चों वो कैसे रहेंगे, अनरिएक्टेड, ज्यादा बचे होंगे। तो यही चीज थी जो आपको करनी थी। ओके ऐसा कभी नहीं बनेगा कि स्टैंडर्ड गिब्स पर एनर्जी 0 हो गया, अगर डेल्टा जी 0 हो गया तो ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगा, केसी का वैल्यू 1 बनेगा, वो कभी पॉसिबल होता नहीं है। तो उस केस को हम पढ़ाई नहीं करते। आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। देखो बहुत छोटे छोटे सेशंस में आपको देने जा रहा हूं बच्चों, क्योंकि अगर सारी चीजों को स्ट्रेच कर दिया तो आप इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होना नहीं है, हर रोज अच्छे से एक एक कंसेप्ट को देखो, उसे प्रिपेयर करते रहो, एंड रेगुलर सेशन देखा ना तो बात खत्म।
आपको इक्विलिब्रियम में कोई हरा नहीं पाएगा। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, कॉपी में लिखो, एक बार फिर से वीडियो देखो, फिर से लिख लो। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट दिस वीडियो। बाय बाय, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। Today we're going to be talking about the reaction quotient Q. In this video, I'm going to go over how you calculate Q and how you use it. We're going to start with an example reaction between sulfur dioxide, SO2 gas, which will react with oxygen gas. And this is a reversible reaction that makes sulfur trioxide, or SO3. We should make sure this is a balanced reaction. We have two sulfur dioxides reacting with one O2 to give two SO3. At equilibrium, we can calculate the equilibrium constant Kc. So at equilibrium, we know the concentrations should be constant because the rate of the forward and backward reactions are the same. And if we plug those concentrations in to this expression, we will get Kc. So Kc is the product concentration raised to the second power. So that's from this stoichiometric coefficient. And then our reactant concentrations. So SO2 squared and the concentration of O2. So we know at some temperature, if you plug in the equilibrium concentrations, Kc is equal to 4.3. But what if we're interested in looking at the reaction and it's not at equilibrium yet? Or maybe we just don't know if it's at equilibrium. In that case, when you're not sure it's at equilibrium, or really at any point in your reaction or any time, we can calculate the reaction quotient Q. So Qc is equal to the concentration of our product squared. So the concentration of the product raised to the stoichiometric coefficient times the reactant concentrations, also raised to their stoichiometric coefficients. So SO2 squared and O2. So you might be wondering at this point, what's the difference? The equation for Qc and Kc will always look exactly the same. And the main difference is when you use them. The equilibrium constant K you calculate only with the equilibrium concentrations. So the C means everything is in terms of the molar concentration. And for the reaction quotient Q, again, everything is in terms of molar concentration, but we can calculate it with any concentrations, and we don't have to be at equilibrium. Molar concentration. So let's calculate this for a set of example concentrations. At some point in our reaction, we have the following concentrations. We have 0.10 molar SO2, 0.30 molar O2, and 3.5 molar of our product. So if we plug these numbers into our expression for Qc, we get 3.5 molar squared in the numerator and 0.10 squared times 0.3 in the denominator. So if I plug this into my calculator, I get that Qc with this set of concentrations is 4,083. So now we know how to calculate Qc. So next we're going to talk about what it tells you. So there are three possible scenarios. So when Q is equal to K, that tells us we're at equilibrium. So if at any point you're not sure if your concentrations are the equilibrium concentrations, you can calculate Q and check if it's equal to K. And in this case, it's not. So the other two possibilities are that Q is greater than K, which is the case here, or Q can be less than K. So let's go through both of those possibilities. We can draw all of the possible values of Q on a number line or a Q line.
So Q can have values anywhere from 0 to infinity. When you have no product, your numerator is 0 and Q is equal to 0. So that tells us Q equals 0 when you have all reactants and no products. And then if you have no reactants left and all products, we have 0 in the denominator, and that gives us a Q value of infinity. So that means at Q equals infinity, we have all products. And then we have a bunch of values in between. And I'm going to just write some intermediate values in here. But the actual intermediate values here aren't super important. We're mostly going to want to compare the relative values of our Q and K. So Q here is equal to 4083, which I will place right around here. So that's QC. And our K in yellow is 4.3. So we'll place that right around here. So we can see that our Q is larger than K, and it's closer to having all products. At the concentrations we have up here, we have way more products than we should at equilibrium. So our reaction is going to try to adjust the concentrations to get to equilibrium. And what that means in terms of our number line is that our concentrations are going to shift so that Q can get closer to K. Since our shift is to the right and it's moving towards all reactants, our reaction is going to favor reactants to get to equilibrium. So when Q is greater than K, like here, we're going to favor reactants. And then the last scenario, when Q is less than K, our reaction will favor products. And we can show that also on our number line. If we had a different set of concentrations where Q was less than K, which I will show using this color here, if we had, say, a Q value around here, then our shift would be to the right towards making more products, and therefore that would mean our reaction is going to try to reach equilibrium by favoring the forward reaction. So that's how you calculate Q and how you use it to see how the reaction concentrations will shift to get to equilibrium. In our next video, we'll go over an example problem using Q and trying to figure out how the reactant concentrations will shift for another reaction. A 1 liter reaction vessel contains 1.2 moles of carbon monoxide, 1.5 moles of hydrogen gas, and 2.0 moles of methanol gas. How will the total pressure change as the system approaches equilibrium at constant temperature? So our carbon monoxide is reacting with our hydrogen in a 1:2 ratio to give us methanol, and this reaction is reversible. We also know the equilibrium constant for this reaction is 14.5 at some temperature. And we know that the temperature is staying constant. So we are going to break this problem up into 2 parts. In part 1, we're going to try to figure out, using the reaction quotient, whether our system is at equilibrium or not. So for this reaction, our reaction quotient Q is the product concentration, CH3OH, or methanol, divided by the concentration of our hydrogen gas to the second power, because of that stoichiometric coefficient. And then also in the denominator, we have our carbon monoxide concentration. We can calculate Q by plugging in the concentrations of these at this particular moment in time. And we can calculate the concentrations using the volume of the vessel, which is 1 liter, and the mole quantities. We know that concentration is just moles divided by volume. Since we're dividing everything by 1, the initial concentrations will be the same as the number of moles. So if we write that out, for carbon monoxide, the initial concentration is 1.2 molar. For hydrogen, it's 1.5 molar. And for methanol,
it is 2.0 molar. So now we can plug these concentrations into our expression for Q. And then we get in our numerator 2.0, and our denominator is 1.5 squared times 1.2. So if we plug this all into our calculators, what I got is that our Q for this particular moment in time with these concentrations is 0.74. So this tells us, first of all, we know that Q is not equal to Kc. So that means we are not at equilibrium. Not at equilibrium. Which means that our pressures are indeed going to change because the system is going to try to reach equilibrium. The second thing we can do using the reaction quotient 2 is figure out how the concentrations will change. Now that we know our reaction quotient Q, we know that our reaction quotient QC is less than K. We can visualize this on a number line. So if we look at all possible values of Q, we know that when Q is 0, we have all reactants. When Q is infinitely large, we have all reactants. We have all products. And then we have all of the possible values in between. What we're really worried about here is just looking at the relative value of Q and K and seeing how the reaction concentrations are going to shift. So Q, we can put on our number line, is somewhere around here. And K is 14.5, so we'll say it's somewhere around here. So this is our Q, and this is our K. We can see that Q is less than K on our number line, and so what's going to happen is, in order to reach equilibrium, our concentrations are going to shift to the right to get Q closer to K, which means what's going to happen is the reaction is going to shift to favor making more products. So if we look back at the balanced reaction, what's going to happen here is it's going to shift to favor the products. So I'm making that top arrow a little bit more bold. And to tie this into what the problem wants to know, we can figure out how the shift to make more products will affect the total pressure. So total pressure for a system that has a bunch of gas molecules in it, we know that total pressure is related to the moles of gas in the system. So since we're shifting to favor the reactants, and on the reactant side we're making 1 mole of gas, and we're starting with 3 moles of reactant gas, we're favoring the side that has fewer gas molecules. So that means as we shift to favor the products, we're going to reduce the number of gas molecules in the system, and that's going to reduce our P total. So the answer is that P total is going to decrease as our reaction approaches equilibrium, and that is because our reaction quotient Q is less than K.